Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Today, I'm genuinely speechless. And I'm speechless because of the love, care, respect, trust, and honesty of all of my friends from all over Pakistan. Many of my friends from Lahore, Islamabad, Quetta, Peshawar, Faisalabad, Hyderabad, Nawabshah, Quetta, and Dubai are also here, only to attend this ceremony. And they all reach here today in Karachi. And I'm also grateful to all my Karachi-based friends and families who are here to celebrate the 20 years of knowledge sharing with us. I was thinking that what I will share with you today, and I discussed this with my management team in the morning, that please advise what I will share. But still I'm not clear that what I will say, because this is a long journey of 20 years. And there are hundreds of stories. Without exaggeration, I'm telling you hundreds of stories, not dozens of stories, related to Nutshell within Pakistan and outside Pakistan. There are learnings of ups and downs. There are learnings of achievements, financial crisis, excellence, social service, and multiple other matters. It's a beautiful journey. But this journey is not possible without the support of my friends and my family, my well-wishers, my mentors. I especially requested Sayyid Masood Ali Naqvi Saab to be here because he played a very important role in my life. And I'm grateful to him that he is here with us on my request. So I want to share a few learnings of my 20 years of journey of Nutshell. And I must say that this is just the beginning. वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है. So around 18-19 years before, I was sitting at a friend's place in Chak Shahzad, Islamabad. He was a telecom leader. He invited me and my few friends for dinner. And we were discussing the political affairs, the economic affairs. And two of my friends discussed about few projects of Nutshell. And someone asked me that, what is exactly your business? You're working in multiple directions. So what is your exact business? And I replied that मैं अपनी जुबान बेचता हूँ. मैं अपनी जुबान बेचता हूँ. And this is a big claim. Because in management terms, Zuban Beshna is all about commitment, a promise, a world of imagination, fulfilling promise. So we were doing the conferences. So for example, we are saying that next year we will host this conference in Islamabad or Karachi or wherever. We will host around 1,000 delegates. We will host around 40, 50 international speakers. This and that and so many other things. Everything is in the air. This is all about your zuban. And with the passage of time, you created the credibility. Same is the case of our communication business. We are doing the narrative building work, the perception management, the image marketing, the outreach.
so many other things, including the public advocacy. जब हम क्लाइंट से बात करते हैं या अपने पार्टनर से बात करते हैं, I hate this word client for my partners actually, because we own these organizations. And without this personal affiliation, you can't serve the organizations if you are treating them as a client. So we know how to say no and how to present the alternate with the logic. So हम जब ये बात करते हैं सारी, तो वो भी एक इमेजिनेशन की वर्ल्ड होती है कि एक साल में हम यहां पर जाके खड़े होंगे, नेक्स्ट 2 years का हमारा ये प्लान होगा. So जब ये मैंने बात कही कि मैं अपनी जुबान बेचता हूं, अपनी टीम को भी ये बोलता हूं कि हमने अपने पार्टनर्स को अपनी जुबान दी है. So this is no more a financial arrangement. This is all about your promise to deliver. So in my personal opinion, the biggest achievement in life, in your personal life and in your professional life, is trust. With trust, you can do wonders. Without trust, you can't do anything. And if you are doing something, I personally believe that this is not sustainable. So my dear friends, in 2015 and 16, 2 years consecutively, I attended the leadership retreat of Harvard Business School. And in December 2016, when I was attending, so one day after the dinner, the dean of HBS was actually highlighting about the endowment fund. And he shared a very important and a very good lesson, which I shared with Sayyid Babar Ali Saab and my many friends in the education sector. He shared that in 1991 or I think 1992, there were 6 or 7 German universities in the list of top 50 universities in the world. And in December 2016, he said that today all those universities are existing, but they are not the part of top 50 universities. So what happened? They all are existing, but they failed to innovate. So he highlighted later, and this was his pitch, that today Harvard is one of the best business schools in the world, but there is no guarantee that in next 25 or 40 years, this will be one of the best schools or even in the top 50 universities in the world. So this was a lesson for me. And I linked this lesson with 2 local stories. One is the story of the famous brand of my childhood, TJ's. या मेरे भाई आसिफ ज़मीर साहब बैठे हैं तो तन्हाइयां ड्रामा देख लें, धूप किनारे देख लें, जितने ड्रामे देख लें, wardrobe was always from TJ's, the biggest brand. उसके बाद इतना बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में मेंस वेयर का नहीं आया, the local brand. तो अब आप उसका नाम सुनते हैं. So 2 years back, मैं ये बहादुराबाद चौरंगी है तारिक रोड के पास, तो मैं उसके पास से जा रहा था, तो मुझे कॉर्नर पे टीजे का एक बोर्ड दिखाई दिया. तो मैं आगे से फिर यू टर्न करके वापस आया. सिर्फ मेरी तशनीकी थी कि यार ये क्या टीजे वही है या क्या है. तो मैंने गाड़ी पार्क की और जब मैं गया तो पता चला वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. तो 15-20 ड्रेसेस लटके हुए थे. But no one is aware. And the second case is the Nirala, the biggest sweet brand. Now, there is no buzzword for Nirala. So the message is that no organization is sustainable. अगर आप innovate नहीं करते, अगर आप out of the box thinking पे नहीं जाते,
अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद को और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करते, तो दिस वॉज अनदर लेसन कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, creativity, and innovation are the most ingredients for sustainability of any organization. My another learning and the third learning, हम हमेशा सुनते हैं कि in every crisis there is an opportunity. हम बहुत सुनते हैं. But I personally believe on this theory because I experienced this theory in my life several times. तो नटशल की बात चली है तो कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं. हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तो हमारे एक भाई जिनको हमसे बड़ा प्यार था, वो कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले शहर बंद करवा देते थे. तो हमारी 5-6 कॉन्फ्रेंसेस आगे पीछे हुई, बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हुए, सब कुछ हुआ. बट उस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी थी. हमने सारी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर में शुरू कर दी और कराची को कंटिन्यू किया विद द बिग कॉन्फ्रेंस, बट सारा इंटरनेशनल जो ऑडियंस था वो लाहौर शिफ्ट कर दिया. और लाहौर मार्केट हमारी ऐसी हुई कि मुझे लोग अभी लाहौर ही कहते हैं, और उस वजह से हमने इस्लामाबाद में ज्यादा अच्छा फुटप्रिंट बनाया. तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसको फेस किया कई साल. फिर कोविड आया तो कॉन्फ्रेंसेस तो बंद हो गई सारी. हमने तीसरे दिन वेबिनार शुरू कर दिया. तो वी वर द ट्रेंड सेटर्स ऑफ वेबिनार्स. शाह भाई बैठे में, तो हमने पहला डिजिटल मुशायरा किया. फिर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्सपर्ट हो गए और हमने यूज किया. बहुत सारे बैंकर्स यहां बैठे हैं, तो वी प्लेड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सपोर्ट द रोशन डिजिटल अकाउंट RDA of State Bank of Pakistan. We worked for the outreach of RDA with 6 commercial banks and directly with the State Bank also in many regions around the world. So this was another big opportunity, and now we are utilizing this expertise of utilizing the digital platforms in our every work, whether conferences, whether outreach, whether the communication, everything. So, my dear friends, one more learning I want to share, and this is all about the competition. तो आज से कोई 20-22 साल पहले, नटशल से पहले की बात है, तो मेरे एक उस्ताद थे और मेरा एक दोस्त बैठा था, वो दुबई में होता है. तो उन्होंने हमें समझाया कि ऑलवेज बिलीव ऑन हेल्दी कंपटीशन. आप कभी आइसोलेशन में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती आपकी. इंडस्ट्री का साइज एक्सपेंड करें, और जो स्मार्टेस्ट प्लेयर्स हैं वो अपनी बाइट बढ़ाएंगे. तो पेस्ट्री पे बिलीव ना करें, केक की साइज बढ़ाएं तो आपकी बाइट ऑटोमेटिकली बड़ी होगी. And we religiously practice this in last 20 years. We believe on healthy competition. We believe on growth of our competition. Because जब सब grow करेंगे तो आपकी growth sustainable होगी. You can't grow in isolation. So this is another lesson, and especially for the Pakistani entrepreneurs in every sector of our economy, is a very important lesson because हम इसको समझते नहीं हैं. सो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहां हम सारे कॉम्पिटिशन्स एक साथ बैठ के इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए बात करें. कुछ जगहों पे होता है बट प्रैक्टिकली उस लेवल पे चीज नहीं होती एक्सेप्ट द लिप सर्विस. तो दिस इज ऑल्सो आवर मिशन कि जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करें, और जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को ग्रो करें जिसपे सबका फायदा हो. One last lesson, and this is also a very good story. In this November 2006, we hosted the World Management Summit in Pakistan. जनरल मुशर्रफ का दौर था ये,
और बड़ी दुनिया के लोग पाकिस्तान आ रहे थे. So we hosted some top class international dignitaries at the Sheraton Hotel. उस जमाने में Sheraton Hotel होता था and दरबार हॉल होता था. So we hosted around 700 persons from all over Pakistan. 22 international speakers. 2 दिन वो एक शो चलता रहा, एक दुनिया आबाद रही. पहले दिन बड़ा एक गाला डिनर हुआ, सारा कुछ हुआ. The second day after the closing, आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जा रहे थे, तो एक अचानक से मेरे पास एक काम आया किसी की तरफ से, और मैं पेपर लेके बिल्कुल हॉल की बैक बेंच पे एक कॉर्नर पे बैठ गया और मैं वो अपना कुछ लिखने लगा और चीजें करने लगा. उस वक्त स्मार्टफोन नहीं होते थे और वो स्टेज भी हट गया. मैं तकरीबन घंटा बैठा हूं एंड आफ्टर 1 आवर एक मोमेंट था जिस वक्त आई रियलाइज कि नथिंग इज हियर. तो हम कहते हैं ना, वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज. तो मैं शायद उसको बहुत अच्छी तरह नरेट नहीं कर पा रहा, बट जो फीलिंग्स मेरी थी वो इतनी जेन्युइन थी कि मैं ये वाकया कई लोगों को सुनाता हूं. लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है. आज हम हैं, कल कोई और होगा. इस लास्ट 20 years में कितने लोग हैं जिनके बहुत हमारी क्लोज एफिलिएशन थी, वो आज हमारे साथ नहीं है. बट दुनिया चल रही है, कल हम नहीं होंगे, दुनिया चलती रहेगी. सो द लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस स्पेशल इंसिडेंट कि मैं एक वक्त में देख रहा था कि सब कुछ हट गया और एक अगले स्टेज तैयार होना शुरू हो गया, क्योंकि अगले दिन सुबह एक और स्टेज आबाद होना था. तो लोग आ रहे थे और लोग जा रहे थे. सो द लर्निंग इज कि हमें अपनी लेगेसी पे काम करना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की एक लेगेसी होती है. आप चले जाते हैं लेकिन आपकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है. और ऐसे बहुत सारे लोग जो आज हम में नहीं है, हम उनको जब याद करते हैं उनकी लेगेसी के लिए काम याद करते हैं. जो कंट्रीब्यूशन उनकी सोसाइटी के लिए है, जो कंट्रीब्यूशन उनकी कंट्री के लिए है. तो पैसों से आगे भी दुनिया होती है. पैसा जरूरी होता है, बट पैसा, मेरी लर्निंग ये है अब जिंदगी की कि पैसा सब कुछ नहीं होता. मैंने बहुत बिलियनियर्स के साथ टाइम गुजारा है, पाकिस्तान से बाहर भी और इधर भी, और मैंने बड़ी खोखली लाइफ देखी है. सिर्फ वो लोग जिंदा रहते हैं जो रियली एक सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं. सो दिस इज अनदर लर्निंग ऑफ माई लाइफ. नटशल की मैंने सोचा था मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा, और ये हमने तय किया था कि हम पूरी सेरेमनी में किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेंगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेंगे. आई ओनली रिकॉग्नाइज मसूद नकवी साहब बिकॉज के मैंने उनको बड़ी मोहब्बत से आज बुलाया था, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है. तो दिस वाज आवर प्रिंसिपल स्टैंड कि हमने किसी इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना. बट इस जर्नी में बहुत अच्छे लोगों का साथ रहा, हमने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे. पाकिस्तान मेरे बचपन से आज तक इज ऑलवेज एट द क्रॉस रोड्स. मैंने बड़े सेमिनार्स और बड़ी डिस्कशंस कराई, और आफ्टर एवरी 1 year वही मौका आता है कि पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स. कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, पाकिस्तान इज ऑलवेज एट द क्रॉस रोड्स. बट इसी कंट्री में लोग ग्रो कर रहे हैं. और मैं आपको बताऊं कि हम तो एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है. 2023 एक बड़ा टफ ईयर था पाकिस्तान में, but 2023 is the biggest growth year of Nutshell. And alhamdulillah, now we are expanding. We are starting our first office in Riyadh, Saudi Arabia, in the first quarter of 2024. And we are expanding our operations in other countries of Middle East as well as Central Asia, including Uzbekistan and Kazakhstan. We are already working very actively, but now we are planning to start our offices. A Pakistani brand working in different regions.
So I'm grateful to all my team members because this is like connecting the dots. And this is our motto also. जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होते ना, पिक्चर कभी पूरी नहीं होती. तो कोई अगर ये कहे कि ये सब कुछ मेरी तरफ से हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है. एंड कनेक्टिंग द डॉट्स की जो थ्योरी है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द सोसाइटी as well as for the country. No one can bring the change in this country in isolation, whether this is military, whether this is civil society, whether this is business community, or the political government, or the bureaucracy, or anyone else. Because there is a need of collaboration. There is a need of connecting the dots. If we really want to bring some change, some positive change. And this is also not possible overnight. There is a need of patience. There is a need of planning. I also served in the government. 6 महीने क्या 3 महीने की planning नहीं होती है, except few projects. In every government, whether the civilian or the military. So you need a plan for 20-25 years with a guarantee of 10 to 12 years continuation of policies like other countries. One more thing I want to mention, that we establish Corporate Pakistan Group. Many friends of CPG are here, and this was managed by Nutshell since beginning, and all our members collaborated. So this was, I believe, that a very good step of Nutshell. And there are 350 members, and many of our members connected with each other through this platform, whether in Pakistan and outside. So I'm again very grateful to all of you. And I hope the next 20 years will be amazing story of Nutshell. I will be there or not, but I'm satisfied that our team is capable enough, the team of stars who can make places, who can manage all these avenues where we are working, whether communication or advocacy or anywhere else. And I always need the prayers of our friends and our families. Pakistan Zindabad.